Hey guys, what's up? I'm a bit irritated right now. I hope everyone else is doing well, but I'm a bit irritated right now because last night I got a message from someone in Lucknow, a student in Lucknow from an ICSE school. I don't want to name the school because a lot of schools have been pulling stunts like this, where the school sent an official notice to the children, saying that in order for the kids to be promoted to the next grade, they are required to give two offline exams. Required to give two offline exams. So they made it sound like the entire letter was worded in a way that if your kids do not give offline exams, if they don't come to school and if they don't take the exams physically, the kids will not be promoted. Now, obviously, parents are required to give their consent, but all parents are going to be scared into saying yes because even if they want to say no. And the school added things like, we'll send you a video of how we've been sanitizing everything, how we have taken certain precautions, which is all good. All right, I understand the school's intention because online exams really, I also feel, is a farce. Students today copy a lot, but that does not mean just because online exams cannot be conducted effectively does not mean that you force or strong arm kids or parents into sending their kids to schools. Right now, in this situation, there are bigger things to worry about than just exams. All right. Unless a school can guarantee in writing that, we assure you that your child is not going to be affected by COVID on his way over here or reaching here and writing the exams, like we guarantee you, this is a written document from our side, your child will be safe. जब तक कि ये नहीं आता है, I don't think you should be sending your kids there unless you want to send it. वो आपकी personal choice है. A lot of parents are either naive, they are innocent, so वो लोग को लगता है कि यार ये नहीं भेजेंगे तो शायद उनको बोर्ड्स में अफेक्ट होगा. What if हम इनकी ये YouTube वाले की बात सुनने जाएंगे? I'm a teacher. I know what I'm talking about. मैं ऐसे ही बच्चों के फ्यूचर को I won't just say things for the heck of saying it. So I'm giving you the actual facts. ICSC के तरफ से ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है where your child is required to go to school in order to be promoted. Okay, ये स्कूल खुद के स्टंट्स पुल करता है in order to get kids to come because उनके लिए एग्जाम्स लेना आसान हो जाता है. So to make things easier for them, they make it look like बोर्ड से नोटिस आया, बट बोर्ड से कोई नोटिस नहीं आया. बोर्ड नोटिस की जब मैं बात करता हूँ तो एक और इश्यू मेरे दिमाग में आ रहा है इज अनदर थिंग अबाउट फॉर्मेट्स. सडनली एक बच्चा मेरे को बोलता है सर ये दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ईमेल एंड नोटिस दैट आवर स्कूल हैज गिवन अस नाउ. ओके, दिस इज आई एम टॉकिंग 2 weeks ago. Why do teachers suddenly just wake up and come up with imaginary formats? Because ICSE ने कोई format release नहीं किया. Okay, so email and notice का एक quality board format hai. At least those who study with me, they know what format I'm talking about. But if your school has been giving you new format saying at this point, saying that this is the format that we are teaching, this is the format that's come from the boards, and ऐसा कुछ भी नहीं है. Okay, this is they're just making it up because boards की तरफ से कोई format changes नहीं हुए हैं. If there's a format change in email and notice, you'll hear it from me. I assure you that I will put it up over here. Okay, otherwise there's no change in the format. So schools sending notices about coming to school is a farce. Whether you're in Lucknow, Mumbai, wherever you're in India, I don't think you should be forced into going to school if unless you are willing to go to school. Second, don't go by false formats. Trust your teachers. जो तुम्हें पढ़ा रहे, मैं जो टीचर को तुम ट्रस्ट करते हो उनकी बात करो. आई मीन जो मेरे साथ पढ़ रहे, आई अश्योर यू कि मैं करेक्ट फॉर्मेट पढ़ा रहा हूँ. ऑफ कोर्स everyone has that one teacher who you have to trust, so trust that teacher. Okay, that's another thing. Third thing, if parents are listening to this message, I'm also disturbed a bit because last week a child texted me. He messaged me, and you know what happens? So many messages come in. I often read messages late. Fortunately, I was on time. He didn't take any wrong steps. But this child told me, "Sir, I'm feeling suicidal." Now, these statements, no, in today's age and day, should not be taken lightly. When a child is saying something like, "Sir, I feel suicidal. I feel like ending my life. I'm traumatized." I was shocked. I'm like, why? He's like, because my parents pressurized me a lot. Okay, I genuinely, my first statement was, "Yeah, welcome to India. ये पूरे इंडिया का ये स्टोरी है. हमारे साथ हो चुका है, सबके साथ हो चुका है." I think somewhere parents have started taking it for granted कि यार यही तरीका, हमने भी ऐसे ही पास किए एग्जाम. You have to be tough. But some kids are sensitive. And इस child की problem ये थी कि मैं इसको जानता हूँ personally. He studies well. He's an introvert. तो वो डाउट ज्यादा पूछता नहीं है. तो बिकॉज ही डजंट आस्क डाउट्स, पेरेंट्स को लगता है कि यार ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा है. और पेरेंट्स का ना एक मेंटालिटी होता है, जब तुम ट्यूशंस भेजते हो, वसूल करो, आस्क हिम क्वेश्चंस, टीचर्स को पूछो क्वेश्चंस, तो हमें लगेगा तुम पढ़ रहे हो. ऐसा नहीं है. हैव यू एवर कंसिडर्ड कि शायद आपके बच्चे को सब समझ में आ रहा है? बिकॉज इन दिस चाइल्ड्स केस आई नो फॉर अ फैक्ट कि जब भी मैंने उसको कोई सवाल पूछा, ही इज आंसर्ड इट. He's always done his assignments on time. Quiet है, बात नहीं करता है ज्यादा. Unfortunately for him, उसके साथ वही होता है जो हम सबके साथ होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तब पेरेंट्स देखते नहीं है.
और जब हम 2 मिनट के लिए फोन चेक करते हैं तभी पेरेंट एंटर होता है रूम में, बोलता है यार तुम पिछले 2 घंटे से फोन पे ही हो, जब भी देखता हूँ फोन पे ही होता हो। यार अपना नसीब खराब है कि हम रॉन्ग टाइम पे फोन उठा रहे हैं, बट बच्चे पढ़ते हैं। मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, देयर आर अ लॉट ऑफ किड्स हु डोंट स्टडी, आई नो दैट, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू इक्वेट योर चाइल्ड विद दोस किड्स। एंड लुक, encouraging your kids to score is one thing, pressurizing your kids to score is another thing. There are two kinds of parents. Parents who are overachievers, जिन्होंने खुद काफी अच्छे मार्क्स लाए थे, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा भी यही लाएगा, बट दैट्स काइंड ऑफ अ पैराडॉक्स। अगर आप रियली एजुकेटेड हो और अगर आप जेन्युइनली एक अच्छे अचीवर थे एंड यू अचीव, सो यू शुड हैव दैट कॉमन सेंस कि जेनेटिक्स डजंट वर्क दैट वे। जस्ट बिकॉज यू are good in something does not mean your child will automatically be good in that thing. So please stop pressurizing your kids unnecessarily. I think that's very unfair. And thankfully to COVID, now because of online lectures, I think I can rightfully say this. जब भी आपको लगे ना कि आपका बच्चा इनफ नहीं कर रहा है कोई चीज, लिव देयर लाइफ। सुबह से शाम तक आपका बच्चा जो कर रहा है आप भी करो, बैठो ना उसके साथ, पूरे लेक्चर्स आप भी अटेंड करो एज अ पेरेंट। So you'll come to know how difficult it is for a child to sit through school lectures, to sit through tuition lectures, then to study, then to finish projects, then to listen to 10 people nag them about studies. I think at this age, ninth and 10th standard, you should leave your kids. You know, गिरते हैं ना, गिरने दो उनको, सीखेंगे। आप अभी जितना भी उनको ना करो, कल भी वो लोग आप ही को ब्लेम करेंगे। मैं तो सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैंने आपको बात बोली है ना कि पेरेंट्स should live the kids life, ये चीज मैं किड्स को भी बोलता हूँ। when I scold the kids because they take their parents for granted, मैं बोलता हूँ कि live your parents life for a day. Why don't you spend, wake up, make breakfast, go to the kitchen, wash clothes, hang clothes, do the household chores, then try and focus on their work because they focus on your studies. आप अपने पेरेंट्स की लाइफ जी के देखो, पेरेंट्स आपकी लाइफ जी के देखें, एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ कंपैशन विल अराइज। बिकॉज हमें जो एंगल में हम बैठे होते हैं ना, हमें लगता है यार ये लोग कुछ कर नहीं रहे, बट put yourself in their shoes. Only then you will understand what the other person is. We are all fighting our own battle. Simple theory. ये टाइम खराब चल रहा, प्रॉब्लम ये है ना, हम लोग अभी भी कोविड को लोकल समझ रहे हैं। तुम एक एक चीज ऐसी चल रही है जिसने पूरे वर्ल्ड को हैज brought डाउन द वर्ल्ड टू इट्स नीज। उसमें इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दोस बिगर इश्यूज, वी आर ऑल बैटलिंग विद आवर स्मॉलर इश्यूज। अभी भी प्रेशर एकेडमिक्स का यही है, अभी बोर्ड्स का एक तो कोई ठिकाना नहीं है। दैट्स अनदर रूमर आई वांटेड टू एड्रेस। लोगों कंफ्यूज्ड है, पीपल पीपल आर लाइक सर आर द बोर्ड्स डिलेड, क्या हो रहा है बोर्ड्स। अरे कुछ कंफ्यूजन नहीं है, देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कंसिडरिंग कि बोर्ड्स डिले होना चाहिए, फिक्स नहीं है। जब फिक्स होगा तो you'll hear it from the council on the council website. तब तक please don't spread rumors. बट मैं ये भी बोलता हूं कुछ भी पॉसिबल है। आपका काम सिर्फ इतना है कि जितना आपने दिन में पढ़ा है, पढ़ाया जा रहा है आपको, रिवाइज करो। और अगर एज अ पेरेंट यू आर वॉचिंग योर किड्स डू दैट, स्टॉप पुटिंग अननेसेसरी प्रेशर ऑन देम। जब आप उनको क्रिटिसाइज करते हो, जब आप उनको बोलते हो तू कुछ कर ही नहीं सकता है, तू कुछ करता ही नहीं है, दैट्स नॉट पॉजिटिव री। मैं वापस बता रहा हूं, शायद आपका बच्चा वो है जो जेन्युइनली पढ़ता नहीं है। ऐसे बच्चे होते हैं, इनफैक्ट मैं खुद कंप्लेन करता हूं कि दीज किड्स आर नॉट स्टडिंग। उसका तरीका ये है कि यू हैव टू सिट विद दोस किड्स, मेक देम स्टडी, बट जस्ट टेलिंग देम कि ये कर वो कर, बट यू आर नॉट इवन बॉदर्ड टू सिट विद देम, दैट्स नॉट द वे टू डू इट। जब टाइम आएगा, आपका बच्चा खुद मैच्योर है, उसको भी पता है उसकी रेपुटेशन का सवाल है, कॉलेज में उसको एडमिशन नहीं मिलने वाला है, उसको खुद के मार्क्स की पड़ी है, वो करेगा। ओके एंड अगर गिरा भी तो उसकी लाइफ है, वो खुद सीखेगा कि हाँ यार मैंने ध्यान नहीं दिया, तो आई लर्न अ लेसन। लाइफ में काफी मौके मिलेंगे उसको, तो खुद की मिस्टेक्स उसको खुद लर्न करने दो। ये जो बात होती है ना, व्हेन अ kid says कि मेरे को आई वांट टू एंड माय लाइफ, इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। It's very sad, you know. So it's just a request, focus on bigger things, focus on facts, take it one day at a time. अगर आप देख रहे हो आपका बच्चा इनफ पढ़ाई कर रहा है, say it, tell him, he needs to hear it from you कि हाँ बेटा मैं देखा है तू पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। So I love you guys, I hope this made sense to you. I spoke about various things together. I'm now going to record my lecture for Act 2 Scene 2. It'll be up soon, okay, for Merchant of Venice. But this was an important concern. So also, if there are kids who are facing issues like this, post it in the comments, so you know people realize that you are not alone. I think everybody is fighting a battle, and the more you hear about it, you realize that yaar hum akele nahi hain, sab log, everybody is going through these problems. All right, teachers, parents, students, everyone. I'm not speaking in favor of students or against parents, मैं सबके तरफ से बात कर रहा हूँ. All right, so I love you guys, stay safe, take care, enjoy, bye.